Hi, good afternoon, everyone. Okay. So, again, with the title itself, all of you must be aware कि अभी इस session में we will try to get hold of your respective ranks, right? Or this is one of the sessions wherein we will discuss not only about the cutoffs, of course, which all of us want to know, but of course about the percentile and ranking based on this particular calculator. ठीक है, तो अगर आपको याद होगा अभी मॉर्निंग के सेशन में इन द लास्ट आई डिड शेयर सम ग्लिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलकुलेटर. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये जो कैलकुलेटर है ना, आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन राइट अवे. ठीक है, इवन दो आई हैव शेयर्ड इट इन द टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम ऑफ अर्था पॉइंट, वहां पे आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दिस लिंक, एंड ऑफ कोर्स शाम का सुबह का सेशन एज वेल, बट हेयर ऑल्सो आई जस्ट पुट इट. ठीक है, कूल. सो आई हैव पोस्टेड दिस इन द कमेंट सेक्शन, राइट? ओके. So this is a really nice initiative, honestly. And first of all, it's not nothing paid. ऐसा कुछ भी नहीं है from lovely professional universities. It's just कि काफी सारे बच्चे they came to us asking about the authenticity, about the views on the percentile that you received, and of course कि क्या numbers हैं जो आपको ये portal आपको देता है once you punch in the details. ठीक है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये रहा आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का पोर्टल, राइट? नाउ अगर आप इसमें नीचे जाओगे, दे हैव शोन देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स. वी आर नॉट गोना बी डूइंग दैट. हम इंटरेस्टेड हैं सेकंड हाफ, ऑलमोस्ट मिड हाफ में, जो सीयूईटी परसेंटाइल कैलकुलेटर है. ठीक है, काफी बच्चे ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, अपना रिस्पेक्टिव परसेंटाइल निकाल चुके हैं, रैंकिंग भी जो उनको एक रफ आइडिया मिल रहा है वो भी देख चुके हैं. ठीक है, सो इसमें आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू सिंपली टाइप इन दी एप्लीकेशन नंबर. ठीक है, अब मेरे से अगर आप पूछो हाउ ऑथेंटिक इट इज, ठीक है, तो द पॉइंट इज कि आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या मेट्रिक्स वो यूज कर रहे हैं for this particular calculator. ठीक है, but having said that, the application number वो यूनिक होता है हर स्टूडेंट का. ठीक है, दूसरी चीज ऑफ कोर्स योर डेट ऑफ बर्थ, राइट? एंड they already have all the application numbers for CUET PG Economics students. ठीक है, जिन्होंने CUET PG Economics के लिए इस साल बैठे हैं. ठीक है, so they already have that number. सो कहने का मतलब ये है कि मैं कोई रैंडम एप्लीकेशन नंबर डाल के आई कांट आई कांट impact this matrix. I can't modify it. I can't hamper it. I can't play with this matrix. ठीक है, so मोटा मोटा whatever the results you might get should be on a right side. ठीक है, on a positive side, on a correct side. Correct. So this is very important. कि आपका आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे एंड देन डेट ऑफ बर्थ डालोगे, देन यू विल सबमिट. ठीक है, अब इससे क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं अपने पास, राइट? सो व्हाट आई हैव सीन सिंस यस्टरडे, इन फैक्ट, बिकॉज आई नो समहाउ स्टूडेंट वन और द अदर स्टूडेंट गॉट टू नो, एंड दैट इट कीप्स ऑन स्प्रेडिंग like a wildfire, right? So, and every one of us wants to know about rank and percentile and everything. Jitna possible ho sake, we want to know all the information, right? Because at the end of the day, even with a score of 230, 235, we are still a bit insecure whether we will get into D school or not, right? And let me tell you very honestly, not to just kind of hype the entire thing, but the score have been too good this year. ठीक है, अब वो कैसे और वैलिडेट होता है, ठीक है, कुछ भी रैंडम चीजें नहीं बोलनी, वो वैलिडेट इस फैक्ट से भी होता है because one of the students, in fact, two students have validated that point as well, कि there are around 300 to 400 students. Again, I'll repeat, 300 to 400 students who have scored, guess what, 200 plus. 300 to 400 students who have scored 200 plus marks. सो यू कैन इमेजिन कि एग्जैक्टली क्या स्कोर्स चल रहे हैं
और व्हाट एग्जैक्टली यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, हमेशा कोशिश मैंने की है कि आपको जो भी अगर मैं कट ऑफ बोलूं, मार्क्स बोलूं, चाहे वो आपको थोड़ा डिसहार्टनिंग लगे, बट आई ऑलवेज कीप द बार ऑन अ हायर साइड, मे बी बाय 5 or 10 marks। ठीक है, दिस इज हाउ आई वर्क, दिस इज हाउ आई ऑपरेट, राइट। सो टू मेक श्योर कि अगर आपका मार्क्स अगर उससे 5 कम भी है और आपका एडमिशन हो जाता है, देन यू विल फील गुड, राइट। बट यहाँ पे आफ्टर सीइंग दिस मेट्रिक्स, यहाँ से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रैंक्स आ रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं कि उनको पता चल रहा है कि दीज मेनी स्टूडेंट्स आर अबव देम, so that's very surprising because having 300 to 400 students above 200 marks is a huge thing out of 300. So you're getting 200 plus marks out of 300, and there are so many students sitting over there, right? तो अब बात 200 प्लस की नहीं होगी, आई गेस अब बात होगी 240 250 प्लस की, टू गेट इनटू द टॉप प्लेयर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ओके। सो अकेला 93.75 EWS is what? Like your marks or from the percentile you're telling? Because look, to certain extent, I agree. The matrix is authenticated, everything is fine, sorted. But humble request, don't take it as the end point in the sense कि इस पे जो मेरे को रैंक आ रहा है, परसेंटाइल आ रहा है, इतने सारे बच्चे हैं, सो डोंट पैनिक ऑन दैट। ठीक है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू these metrics, these calculators, these all are third party options। ठीक है, and to what an extent they can do, and I guess they have prepared a very good thing solely because they also have your application numbers, right? So they know कि मेरे पास अगर for example मैं application number में कोई भी random 1 2 3 4 डाल दूंगा, it won't accept, right? Ideally it should not। ठीक है, so that is the thing कि they have that data available with themselves, and then of course the data in the sense of application number, date of birth and other information, then when you punch in the information yahan pe, theek hai, and then you submit, so there is that validation that they can do background mein, right? So because of that validation, aapko jo result milega, I expect it to be on a true side। ठीक है, I genuinely believe कि it to be on a true side, but at the end of the day, I'll still call it as a third party instrument. So I can't say 100% it to be true, and rather say कि you believe in the final cutoffs। ठीक है, कि वहां क्या निकलेगा, क्या एक्चुअल में उतने बच्चे हैं कि नहीं है, that is something I would suggest। यार अगेन दैट्स व्हाई आई आस्क कि आप मेरे से जो भी पूछो, आप अपने मार्क्स के ऊपर एक बार फिर भी पूछ लो, बट आई वोंट स्टिल कमेंट ऑन द परसेंटाइल यू रिसीव्ड ओवर हियर। ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट एनी ऑफ द स्टूडेंट, एनी, चाहे वो कहीं से भी हो, राइट, watching this session and going through this calculator and calculating these stuff, and then feeling a bit nervous after seeing the marks। ठीक है, वो चीज नहीं चाहिए, correct? So that's why I'm not going to comment on the percentile you receive over here। I agree to the fact कि हाँ आपको जो मिलेगा that would be on the right lines, but still I would, हाँ आपको पूछना है आप कट ऑफ का, then you can share your marks, then I can confirm, but of course। Okay, I won't comment on other options। ठीक है, या डॉलिश आई गेस रैंक आपको वहां पे वो बता रहे परसेंटाइल के बेसिस पे कि कितने बच्चे आपके ऊपर है, कितने बच्चों के आपसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो इट्स बेस्ड ऑन दैट। यश, नई DTU MA इकोनॉमिक एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मॉर्निंग के सेशन में आई डिड ओपन द टैब, बिकॉज वेन एवर आई टेक अ सेशन आई ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिले। सो आई डिड डिस्कस अबाउट DTU। ठीक है, आई गेस काफी बच्चे बोल रहे हैं डॉलिश कि उनको रैंक दिख रहा है, तो एक बारी आई जस्ट आस्क समवन एल्स एज वेल हाउ डिड दे फाउंड दैट रैंक, तो आई शेयर इट इन द ग्रुप। ठीक है, ओके। हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग DTU का सुबह हमने देखा था, तो द रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज नॉट ओपन येट। ठीक है,
The other one was I shared information of Pondicherry University. ठीक है, उसका भी it is not open even though the last date of registration is 30th. ठीक है. तेजस अगेन, मतलब I would rather restrict myself from commenting on the percentile जो आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हो. आई कांट कमेंट मच. ठीक है, आप अपने मार्क्स अगर बोलोगे आई डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक, बट बेस्ड ऑन द कैलकुलेटर आई कांट कमेंट मच है ना. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके. वन सेकेंड. Because, for example, Abhi, one of the student actually, 98 percentile OBC, any chance JNU? Yeah, Satpal, again, I would rather, हाँ, आप exactly, आप marks बोलोगे, I'll more than happy to help. Yes, Satpal, definitely it's possible. Even I'm assuming कि अब जब मेरे को भी पता चल रहा है कि 100 बच्चे 200 बच्चे नहीं है, इनफैक्ट 300 400 बच्चे हैं, और इनफैक्ट नंबर थोड़ा ज्यादा ही है, मैं फिर भी थोड़ा कम बोल रहा हूँ आपको, जिनके 200 के प्लस है. तो स्टिल आई सी कि 207 ओबीसी इज पॉसिबल इन द सेकेंड लिस्ट. ठीक है, ऑफ जेएनयू, नॉट डीएससी. यस, यू कैन अप्लाई. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी हैं. आप पहले अपना स्टेट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखो. ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा नहीं है, देन नियर बाय स्टेट देखो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ट्राई other options. Mainly central university are the ones which will make sure कि आपको वहां पे मिल जाए. But 117 with EWS शायद कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल बीएचयू या डीटीयू, कोई लिस्ट निकाले अराउंड थर्ड फोर्थ राउंड पे, which might help you in that, है ना. I think yes, Vijay, 166 marks should be enough for HCU and Gokhale, but I don't know how the entire game will be played this year. ठीक है, when I say the game, I mean कि मैं अगर अपने आप को एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी मानता हूँ, then I will have to set the tone very high, right? I can't be on a medium or a lower side, because सारे बच्चे मुझे चूज करेंगे, and with me it's like DSC and JNUs, right? तो सारा का सारा कट ऑफ अगर ऑलरेडी 250 प्लस पे जाएगा, 240 प्लस पे जाएगा, सो जो इवन जो टीयर 2 यूनिवर्सिटीज है ना, दे विल ऑल्सो हैव अ स्लाइटली अपर बार. दिस इज व्हाट आई फील. ठीक है, बिकॉज अगर मैं ये नहीं जान पाता कि 300 400 बच्चे 200 प्लस पे बैठे हुए हैं, then I would have definitely told you 166 is possible for both GIP and HCU. Right now, again, I'll still say कि हाँ, to a certain extent it's possible, but we'll have to be a bit cautious. Okay, so I'll take your score 192. ठीक है, rank percentile पे I won't discuss, right? EWS 192. यार, I guess आपका JNU is possible. DSC थोड़ा देखना पड़ेगा, but JNU and rest of the universities are possible. 204 पे यार, ऑफ कोर्स काफी सारे ऑप्शंस ओपन रहने चाहिए मेरे हिसाब से स्टिल, बिकॉज इट्स 204 विद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. एंड बीएससी एक बार को शायद थोड़ा टफ हो, बट आई फील कि शायद उसमें भी पॉसिबल हो इन द लेटर हाफ. ठीक है, 200 मार्क्स में डॉलिश, यस डेफिनेटली. ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस ओपन हैं एक्सेप्ट डीएससी अभी के लिए. ठीक है, जेएनयू भी अगर जाता है, देन आई सी इट अराउंड सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट के आसपास, इनफैक्ट थर्ड मेरिट लिस्ट के आसपास, क्योंकि दे विल ऑल्सो हैव टू कीप द बार ऑन अ हायर साइड. ठीक है, जगरनॉट 235 300 जनरल जेएनयू, ऑफ कोर्स आई थिंक इट इज पॉसिबल. जगरनॉट डेफिनेटली. रमेश CUQB 12, कश्मीरी माइग्रेंट HRM. If I'm not wrong, COQP is MBA, यार रमेश, है ना. And with Kashmiri migrant category, it is possible, yeah. HRM, yeah. The 11 COQP 11 is MBA or 12 is MBA. दूसरा LLB है. But anyhow, with the Kashmiri migrant category also, that will help you in getting.
Hmm, 197 OBC DU JNU still possible, Adarsh. JNU is still possible एक बार को. DSC would be tough. ओके, वन वर्ड आंसर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में विदाउट अ डाउट बहुत हायर जाएगी. मतलब बहुत से, आई आई मीन कि एटलीस्ट 10 से 15 ऊपर ही रहेगा इस साल. दैट इज फॉर श्योर. ठीक है. एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू फॉर स्कोरिंग सच अमेजिंग मार्क्स आउट ऑफ 300. ठीक है. एक बार को ये होता कि had the score been inclusive of that 25 questions जिसमें you have English and other easy questions. But this bar, all of you have scored tremendously well in the domain subject. So yeah. Mhm. Aryan, I guess DSC, even if it possible, then third or fourth list. अगर वो वहां तक जाता है तो, because or else they might just wrap it up at around 210 के आसपास, 215 के आसपास भी chance है. Rashmi, yes, 184 HCO possible, definitely. Martinanda 170 original category SU. I guess both, Papu, I guess 175 for both HU and BHU. Like I told you, MBA, correct. 12 is MBA, COQB 12 is MBA. So yeah, yes, Ramesh, it's possible. Weber says 234 OBC, JNU possible. Thank you, sir. Okay, thank you so much, Vibha, first of all. And of course, 234 OBC is definitely possible because I don't see JNU still going, because last year के अगर आप compare भी करो, around 220, 225 का first merit list था for the general category. तो आपका उस basis पे भी it's already 10-15 above. So I don't see any issues, Vibha, you getting into JNU. आई थिंक सो यार. 192 EWS पे कॉल इंटरव्यू आना चाहिए, बिकॉज हाउ आई वुड ऑपरेट इज कि मेरे पास जो बच्चा हो ज्यादा से ज्यादा हो. ठीक है. बाय दैट आई मीन क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा होगा, ठीक है, आप सब ने मार्क्स लाए हैं, ठीक है, बट ऑल ऑफ यू माइट नॉट बी एट द सेम लेवल. ठीक है. सीयूटी में मार्क्स लाना एंड ऑफ कोर्स जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, दोनों अलग चीजें हैं. ठीक है. सीयूटी का एग्जाम माइट नॉट हैव टेस्टेड योर एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेसिक्स. ठीक है. ऑनेस्ट फैक्ट है. राइट. बट दे with the interview round, they might be in a position to test you in a far better way. Correct. And that's why they would like to have a larger pool of students, right? And secondly, and from that larger pool of students, they would like to have students on board who are genuinely intellectually strong for their course, which they feel कि हमारा जो course है that deserves students who should be knowing so and so. ठीक है. So उस तरीके से उनका जो राउंड होगा, जो पैनल होगा, डिफरेंट पैनल्स होंगे फॉर इंटरव्यूज, they will conduct it, right? So that is the reason they have kept the interview round. And I have personally talked to one of the faculties as well. ठीक है. And she kind of suggested and we also said कि हाँ, interview round will make sure कि आपका जो admission process है, that still gives you some of the best students that you want. क्योंकि IGDR का जो written paper था last year और पिछले सालों तक जो था, that used to test you. ठीक है. Which CUT paper won't have, and that is what happened this year. It actually didn't test you that much. So that interview round will definitely help the institute to make sure कि जो उनको लगता है उनके कोर्स के लिए जिस टाइप के बच्चे उनको चाहिए, इंटेलेक्चुअल वाइज, नॉलेज वाइज, they get those students. So they will have a larger pool and definitely what was the number? 192. I see at least 180 plus should be called for the interview. ठीक है. Okay, so where we were, OBC 143, Ujjwal GIP possible. यार उज्जवल, मेरे को आप ये बताओ, मेरे को मतलब आई रिमेम्बर योर नेम. ठीक है. सो आपने सेम मार्क्स बोले थे, मुझे क्यों याद है कि आपने थोड़े ज्यादा मार्क्स बोले थे पिछली बार.
आई ओनली रिमेम्बर योर मार्क्स, बट मेरे को लगता है कि शायद आपने थोड़े ज्यादा मार्क्स बोले थे, पर अभी आप थोड़े कम मार्क्स बोल रहे हो। आई डोंट नो, मतलब मैं ही शायद गलत हूँ, आई डोंट नो। ठीक है, बट एनी हाउ 143 ओबीसी गोखले might be possible, yeah, might be possible with 143, because अगर मैं देखूं भी सब्सिक्वेंट लिस्ट में वो कितना ड्रॉप करेंगे, तो शुड बी अराउंड 160 के आसपास। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी। In case of 160, then accordingly I feel 140 can be the case for 143 OBC should be possible। ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा आई एम लुकिंग एट योर मार्क्स एंड रैंकिंग, एंड इतने सारे बच्चे इतने मार्क्स पे हैं, देन आई ऑल्सो फील कि नहीं यार, शायद मैंने थोड़ा सा कम मार्क्स बोल दिए, शायद ऊपर बार सेट हो सकता है। बट स्टिल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक विथ 143 ओबीसी फॉर गोखले, राइट? आई गेस यस, जगन्नाथ 235 में नॉन डीयू जनरल का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई आई फील, हाँ, बट एट द सेम टाइम राइट नाउ आफ्टर सीइंग यहाँ का जो percentile calculator है, I can't confirm you around first list में, honestly। last time तक I was pretty comfortable with 135 plus, but अभी इतना नहीं हूँ। I am a bit dicey over here, right? So yes, I guess इस पूरे not only from the session itself, but overall in general, LPU is getting lot of promotion themselves. So but they have done a really good thing, really good thing. If the numbers are even 90% to the actuals in terms of ranking and other stuff, then they have done a really good job. Okay, so one with SCMBHU, HCU Gokhale. I guess HU might be possible, Rehan. Might be possible, yeah. Sahu 160 TWS may, I guess you will still have options. All options should be possible except Delhi University and JNU, and शायद IGDR as well. Apart from that, I don't see आपको शायद इतना problem आएगा। HCU is possible, Gokhale also is possible, ठीक है, DTU is also possible, Ambedkar is also possible. So yeah. Vishak Matthew, one. Okay, so Vishak, you will have the options like HCU, ठीक है, you will have the options like Ambedkar शायद से, but पता नहीं, मतलब reason I'm saying पता नहीं is because अब अगर वही, अगर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बहुत हायर एंड पे अपना कट ऑफ रखेंगे, तो इवन द टीयर टू इश universities will also have to make thoda sa change, and they will also have to go on a higher side। ठीक है, so शायद थोड़ा सा टफ रहेगा। even DTU might not have you in the very first list, और चाहे वो अम्बेडकर हो चाहे वो HCUs हो, they might not have it in the first but maybe subsequent list। Okay, Anisto, I just opened base का website आज सुबह के session में, ठीक है, I did open that and I just went through the eligibility stuff. I haven't gone through base का काफी चीजें, so let me just have a look at it once, right? And then I'll share कि हाँ क्या expected cutoff हो सकता है, but anyhow 150 plus 150 के around में भी they are having it, right? Archie Singh competitive is IFT. Okay. So IFT is known for their MBA. Okay. Let's be very honest. Okay. IFT means MBA, MBA means IFT, but they started Masters in Economic course couple of years back, like 4 or 5 years back, right? And they offered Masters in Economics at Kolkata and Delhi campuses. Okay. This is about IFT. Now, in terms of competitiveness and stuff, and of course, placement wise, look, course wise, it's a decently good option. Course structure is also well designed. They have good electives as well, right? And but you have, I would put it that way, you have better options right now to look at, okay? But IFT is not a bad option, okay? If you think कि नहीं आपका, let's say मेरा, I wanted to get into D school, JNU, or any of the IITs,
or ISIs, right? But मेरा वहाँ नहीं होता, and I'm based out of Delhi or Kolkata, and I want to get into an institute which is good enough and it is in my hometown. Then IFT is a good option. 168 EWS HCU. I see both 168 EWS में दोनों should be possible. Sayantika 227, JNU is more practically possible. DSC में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, right? Okay, 234 marks. Vibha, both are possible. Again, JNU might be possible in the very first go, DSC in subsequent list. Okay. Yes. So we give it's part of the course. Okay. Separately, we do it for IGDR as well. We do it for ISI as well, right? So that we will announce as and when the dates come out. Okay. For non-enrolled student. बाकी enrolled student के लिए interview is always part of the course. ठीक है? Okay. Yes, 200 OBC NCL JNU is possible, but हाँ, good कि आपने आगे ही लिख दिया which list. So around शायद third list तक या second में possible है. Lakshya 198 general JNU is still possible, but DSC is tough. Is tough. ठीक है? ओके सो ऑफ कोर्स जैसे ही आईजीडीआर के इंटरव्यू का आपको कॉल आता है, ठीक है, जस्ट फील फ्री टू कनेक्ट टू अस. ठीक है, वी विल अरेंज इंटरव्यू सेशन, वी विल कंडक्ट इंटरव्यू सेशंस फॉर आवर स्टूडेंट्स, कोर्स स्टूडेंट्स. दैट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कोर्स, सो दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. फॉर नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स यू कैन कम टू अस, वी विल हैव अ मॉक इंटरव्यूज फॉर आईजीडीआर एज वेल. Okay, how the rigor of course at Jamia. Jamia offers a good, decent course. ठीक है? It's a good, fairly good option if student wants to pursue their masters in Delhi itself. They don't want to go out, right? Because Delhi में आपके पास बहुत सारे options हैं. So Jamia is also one of the options, and it's a fairly good option, no doubt about that. Just again, which I say for all the colleges and universities, just go through the कोर्स स्ट्रक्चर करिकुलम. ठीक है, फैकल्टीज को देखो वहां पे, राइट, एंड लुक एट द इलेक्टिव्स. सो आई से इट दिस वे कि आप एक बार उसे क्रॉस चेक करो, बिकॉज ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. ठीक है, एंड आप इसे कैसे भी ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. ऑल ऑफ यू आर नाउ मूविंग आउट ऑफ योर बैचलर्स. ठीक है, bachelors till this year have been like, because some of the students joined at the time of COVID and other stuff. So it has been a fairly schoolish type thing. Cheese would have been, you would have been taking it very lightly. But now you're moving out of bachelors, you're going to masters. Okay? So you have to start taking some sort of responsibilities as well, some sort of research work as well at your own end. Okay? Compare it with the fact कि आपको job market में जाना है. ठीक है, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी डजंट हैव अ प्लेसमेंट सेल, राइट? देन यू वोंट रिलाई ऑन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी या आपके एचओडीज, उन पे आप रिलाई नहीं करोगे, राइट? You will go out, you look over LinkedIn, other platforms for jobs and stuff. So that is what I'm trying to say. कि even now, when you look at the courses, look at the universities, जैसे हमारे सामने LPU है, for example, ठीक है, even though they have presented you with a calculator, that doesn't mean कि you will right away join, right? So उनका भी course देखो, they also have a good course. LPU has a good course, no doubt about that. So for any university, any college, just go through the course curriculum, look at the faculties, look at the electives. These are the three things, in fact, I usually look from an enrollment point of view. ठीक है? Uh, I guess, yes, with 170 PW category, there is a scope. You might get a call, because anyhow I see it around till 185 तक शायद जा सकता है, but with 170 PW category it's possible. ठीक है? 236 Sandeep, not मतलब of course any other day. 130 236 I would have said straight away yes. बट अभी जो बच्चे अपने स्कोर्स बता रहे हैं, रैंक्स बता रहे हैं, देन मे बी इन सेकंड. बट आई फील कि हाँ,
स्टिल चाहे कितना भी गया हो, शायद 230 235 विल ऑल्सो गेट यू इनटू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. Aman, I would require I would require marks, not the rank जो हम यहाँ पे calculate कर रहे हैं, because यहाँ के rank पे I'm not commenting too much, but हाँ, that will give you a rough idea आपका rank कितना है, कितने लोग आपसे ऊपर हैं, कितने लोगों ने 200 plus score किया है, so that way. ठीक है. Raman is saying 191 general eco honors, any chances of IGDR? I guess Raman, IGDR is possible for your call. DSC would be tough, and JNU, agar by any chance if it goes lower than 200, then fairly possible. But practically possible is IGDR. Okay. Okay. Aman says 193 marks. Okay. So again, Aman, 193 marks with the OBC, I guess DSC अगर आप पूछ रहे स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद मुश्किल होगा, राइट, बट JNU इज स्टिल क्वाइट पॉसिबल, राइट. तो आप देख सकते हो उसमें 193 में तो OBC कैटेगरी टिल JNU सारे पॉसिबल होने चाहिए. DSC वुड बी टफ. हम्म. Thanks, Aman, for that. Aman says कि marks 193 and then he gets a rank of 600. ठीक है. तो अभी आप सबको ये भी समझना पड़ेगा कि नॉट द एंटायर सेट जो हमारा पॉपुलेशन है या सेट है जो सीयूटी के लिए बैठे थे, उन सब ने अपनी डिटेल्स इस सिस्टम में अभी पंच इन की हैं, अभी नहीं की है. ठीक है. So whatever the marks, whatever the rank you are getting is based on the set which they have received till now. ठीक है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लाइक अभी हम सेशन ले रहे हैं, अभी इसके बाद जो बच्चे देखेंगे, आप जिनके साथ इस सेशन को शेयर करोगे, राइट, वो लोग जब देखेंगे शायद इफ द मैट्रिक्स होल्ड्स कि जैसे जैसे डेटा फीड इन होगा आपकी रैंक अपडेट होती जाएगी, देन इट इज ऑसम. ठीक है. बट अगर ऐसा नहीं है कि अगर लेटर ऑन मैं अपना डेटा फीड कर रहा हूं एंड योर रैंक विच यू डिराइव्ड 1 hour बैक वो एज इट इज है, उसमें चेंज नहीं हुआ है, देन यू माइट नॉट गेट द एक्चुअल पिक्चर. ठीक है. सो कहने का मतलब ये है कि जब आपने अपने 193 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 600 रैंक मिली, मीनवाइल अब तक और बच्चे दे चुके होंगे, यहाँ पे सबमिट कर चुके होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन दैट योर रैंक आइडियली शुड फ्लक्चुएट. ठीक है. एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ईच वन ऑफ यू, राइट. So that is the reason I am a bit skeptical in terms of commenting on the uh, ranks you're getting over here. ठीक है. 230, हाँ 235 में फर्स्ट लिस्ट में JNU is sorted, जगन्नाथ. Yep. 116 SC female achieve possible. Uh, Sujata, even if it's possible, then it will be around third fourth list. थोड़ा tough रहेगा अगर आप honestly पूछो, but even if it goes, then third fourth list. Sir, rank change नहीं हो रहा. Okay, thank you, Aman, for that, for updating on that. So, अगर वो अपडेट नहीं हो रहा है, then the matrix is not including the fact कि नए नए बच्चे, क्योंकि देखो अभी तक हमने जब बात की है थ्रू आउट दिस सेशन, 50 student, at least 50 to 100 student would have already punched in their numbers, their application numbers, score and everything. तो आइडियली योर रैंक शुड हैव चेंज. मैं नहीं मान सकता कि किसी भी बच्चे ने इस पूरे आधे घंटे के सेशन में अभी तक 193 प्लस डाला ही नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई the matrix is not evaluating itself, not updating itself based on the latest data. So thank you so much for updating, Aman. Econ major 183, DU, OBC, yeah, it will be tough with 183 OBC quota DU student. DSC will be tough. क्योंकि लेट मी टेल यू मेजॉरिटी बच्चे जो आई एम नॉट डिस्टिंग्विशिंग. ओके. सो देयर कैन बी अ सिनेरियो एक्चुअली कि उन्होंने बेसिकली, जैसे मैंने आपको सुबह के सेशन में भी बताया था, राइट, आई टोल्ड यू कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है
इंफॉर्मेशन इन द सेंस आपके बैचलर्स के मार्क्स, 10th 12th के मार्क्स, राइट, एंड ऑफ कोर्स आपका स्कोर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, विच आर अराउंड 50-60 प्लस पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, उन सबके पास आपका डेटा जा चुका है। ये सुबह के सेशन में ही मैंने आपको बताया था, राइट। तो उनके पास आप सभी के मार्क्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर सिनेरियो एंड दैट कैन बी अ वेरी प्रैक्टिकल एंड ट्रू सिनेरियो एज वेल, ठीक है। तो सबके मार्क्स, अगर मैं लेट्स से आई एम द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आई आई वोंट टेक द अभी कैलकुलेटर वाले इंस्टीट्यूट का नाम, आई आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, XYZ एजुकेशन, ठीक है। मेरे पास आप सबका डेटा है, आप सबके मार्क्स हैं, राइट, दैट्स वेरी क्रेजी एज वेल, राइट। सो आई हैव ऑल द मार्क्स, सो आई नो आई कैन एक्चुअली एक्सेल में डाल के बस मैं फिल्टर करूंगा एंड आई हैव इट, करेक्ट। सो आई नो कि एग्जैक्टली क्या रैंक है, एज अ इंस्टीट्यूट आई नो, ठीक है। सो दैट द पॉइंट इज कि उनके पास जो एक्चुअल लिस्ट है पहले उनके पास आ चुकी होगी, मे बी शायद मार्क्स के बाद उन्होंने खुद रैंक बनाई हो या रैंक वाइज आ चुकी हो, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पूरी लिस्ट उनके पास हो सकती है, और तो जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन नंबर और डिटेल्स डालते हो तो शायद वो वहां से वो डेटा रिट्रीव करके आपको आपके सामने शेयर कर देता है। तो द लिस्ट और द मार्क्स एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर विद देम। सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो रैंकिंग है, दैट इज द रीजन इट इज नॉट चेंजिंग, कि these might be your final ranks as well, just assuming that's it, ठीक है। यार आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एनी रैंक्स, I'm not calculating any ranks. Students have shared their ranks. आप लोग यहाँ पे भी शेयर कर रहे हो, and based on that. अच्छा, अगर आप पूछ रहे हो कि बच्चों को कैसे दिख रहा है, then I guess if anyone can share कि exactly आपको रैंक कैसे दिख रहा है पोर्टल पे, तो आप एक बार नेविगेट करके यहाँ पे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, दैट इज द रीजन रैंक्स चेंज नहीं हो रही हैं, 10 घंटे बाद भी चेंज नहीं होंगी, बिकॉज दे माइट बी द actual ranks as well. Just a scenario, just a theory, nothing more than that. We gave net even when we are in the first years of masters. Lakshya is saying some people are saying we can give UGC net even when we are in the first year of masters. Okay. जहां तक मुझे पता है, मतलब you can the final year students can sit for net, ठीक है। अब टू व्हाट एन एक्सटेंड द फर्स्ट ईयर वाला सिनेरियो इज, मेरे को देखना पड़ेगा, मे बी शायद, क्योंकि अगर आप बात करो पिछले एक साल में नेट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस, ठीक है। एंड ऑल्सो गुड थिंग लक्ष्य है कि यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एज वेल, सो कुडोज टू यू, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, देखो यूजीसी नेट इज नॉट द सेम जो 3 साल पहले था, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, यूजीसी इज नॉट, नेट इज नॉट द सेम जो 3 साल पहले था, थियोरेटिकल, पूरा थियोरेटिकल पेपर आता था, राइट। नाउ इट्स मोर प्रैक्टिकल। आप बस दिसंबर का पेपर उठा लो, आपको समझ आ जाएगा कि जो पुराना टाइम था नेट का वो जा चुका है, इट्स मोर प्रैक्टिकल। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन एज वेल, यस, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नाउ अलाउड टू सिट फॉर द यूजीसी नेट। Okay, to answer your question, the first year students also can now sit for the UGC net paper. ठीक है। If someone is asking about your percentile and rank, you can share with your friends. All of these are your friends. Some of them might join you in your respective colleges. So yeah, 260 DAC over possible. Mridul, yes, definitely. If you have 260 journal due student, DSC over GNU possible. So ideally, you have both the option in your hand, and yes, both of them in the very first list are possible. And I would suggest, of course, if you have interest in economics, core economics, then DSC is the option over JNU that you can go for. So yeah, definitely you'll get it. Huh. Thank you, Jagannath. Your percentile and everything is same. So that I am just having another theory कि ये जो आपको marks दिख, जो percentile दिख रही है, जो rank दिख रही है, that might be the actual, ठीक है।
only assuming on the fact कि आपका information marks are already with the participating universities. ठीक है? I'm not authenticating anything. It's just another theory based on the fact कि marks are shared with all the participating universities. So if I want to, I can do and present your ranks or percentile based on that. ठीक है? Cool. Uh, That's it. That's it. Okay. Okay. So we'll look at D2. D2 should be around 170, 180 के आसपास योग्यता. Vanshika is saying rank is not showing, only percentile showing. Here, हाँ, I don't know exactly कैसे everyone is able to see. So percentile show हो रही है. Rank calculate करना पड़ेगा. Okay. Okay. Thank you, Aman, for that. So, yeah, everyone जिनको rank नहीं दिख रही है, so ideally you will have to calculate the rank. ठीक है. So if anyone can take the initiative and share कि कैसे आप लोग कर रहे हो उसको, then it will help others as well. Or else to sum up, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ percentile दिख रहा है. ठीक है. Cool. Okay, I'm only getting the percentile. Yes, 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 Unreal guy. काफी टाइम बाद यार, काफी टाइम बाद. But somehow I remember आप सब में से बहुत से बच्चे, because I've been interacting with almost all of you जब भी सेशन होता है. So he's coming after so long. Yes, Unreal guy, you will have to calculate जैसे मैंने बताया. The rank is not presented, it's just the percentile which is presented. So अगर कोई guide कर सकता है तो please आप नीचे लिख दो comment section में how you can just calculate कैसे आप कर रहे हो. आपका क्या criteria exactly, right? So percentile can be the actual one जो भी आपको वो show कर रहे हैं. Okay. यस सूरज प्रताप, आप मेरे को ना मार्क्स प्लीज बता दो, बिकॉज आई एम नॉट कमेंटिंग बेस्ड ऑन द परसेंटाइल एंड द रैंक जो अभी यहाँ पोर्टल पे अवेलेबल है, विच इज अ थर्ड पार्टी पोर्टल. दैट्स व्हाई आई एम नॉट कमेंटिंग. आप मेरे को मार्क्स बता दो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. है ना? If anyone can share ki how you guys are calculating the rank, please share so that many students who are not able to, then they can find their rank as well. थोड़ा satisfaction ही मिलता है when you see कि हाँ, this is the rank I'm getting, so it's good. Thank you, Unreal guy. Of course, I remember all of you जो join करते हैं, so I always do that. ठीक है. Okay, thank you so much once again, Aman, for taking that initiative. ठीक है. Everyone, please look at the formula or the method which Aman has mentioned. तो आप लोग भी same तरीके से निकाल सकते. He says 100 minus percentile multiplied by 18379 divided by 100. So ये 18379 is what, Aman? A number of students who actually set for it. But for everyone's reference, look, everyone is confirming. Thank you so much, Shivam. So the formula is same, which everyone is saying. अगर मैं इसको copy कर सकता हूँ, can I copy? नहीं, I can't. Okay. Let me also just type it for everyone's reference. 100 minus percentile. Exactly. Total number appeared. Good. यार अब देखो, आप सारे के सारे इतने सुपर इंटेलिजेंट हो, तो मार्क्स तो आने ही थे सबके. और जब मार्क्स आएंगे तो फिर कट ऑफ बढ़ेगा. आई गेस आई हैव टाइप्ड इट राइट. एक बार देख लेना आप लोग. एक सेकेंड मुझे देना जरा. ठीक है. हाँ. कूल. ग्रेट. थैंक यू अमन. थैंक यू. यस, थैंक यू. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड 18379. कूल. हाँ जी, हाँ जी, आप बोलो. ओके. हाँ, सॉरी वेस, आई जस्ट मिस द क्वेश्चन. सो 195 मार्क्स पे बताओ. सो 195 में यार आईसी आपने पूछा है, डीएससी जेएनयू. आईसी जेएनयू
स्टिल पॉसिबल, बट डीएससी थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड वन। ओके। ओके, वन सेकेंड। ओके, सो आई हैड टू चार्ज माय लैपटॉप वंस। ओके, ठीक है। द मोमेंट आई वेंट टू चार्ज माय लैपटॉप, सम ऑफ द स्टूडेंट वेंट अवे। ठीक है, कोई नहीं, दे विल जॉइन बैक, नो वरीज। ठीक है। सो ऑफ कोर्स, जस्ट टू काइंड ऑफ रीस्टार्ट। सो पहली बात, इफ पॉसिबल डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, कलीग्स, even though it's kind of promoting LPU, but still they will feel good कि अगर उन्हें they are able to see their marks and stuff. ठीक है। Number of students appeared. Cool, cool, cool. हाँ, yes, yes. Like I told you, JNU is still possible. DSC थोड़ा मुश्किल रहेगा यार। I completely agree. आप सारे ही थोड़े एंशियस हो इस टाइम पे, और वो होता है। अब आप जब भी कोई एग्जाम देते हो ना, चाहे वो, आई ऑलवेज गो बैक, लाइक चाहे वो 10th के बोर्ड्स हो, 12th के बोर्ड्स हो, या इवन इनफैक्ट फॉर एक्सेप्ट आपके कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम्स के, आप हर एग्जाम में एंशियस रहते हो, थोड़े टेंशन में रहते हो। ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड, इवन आई वाजंट दैट सीरियस अबाउट द सेमेस्टर मार्क्स, सो आई एग्री। सो या, जेएनयू इज पॉसिबल, डीएससी थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है। एनीवन हैज 208 marks, कैन यू प्लीज टेल व्हाट्स योर percentile? यार, शिवम इज आस्किंग if anyone has 208 marks. So if you could just confirm your percentile, it will help him as well. Ishan says 170 DSC OBC. यार ईशान, डीएससी वुड बी टफ। ठीक है। जेएनयू भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट पोस्ट दैट आई गेस ऑप्शंस लाइक आईजीडीआर शायद से अगर हो तो 170 विथ ओबीसी कैटेगरी तक जा सकता है। देयर इज स्लाइट चांस। गोखले माइट बी पॉसिबल, एचयू, अंबेडकर, डीटीयू, ऑल दीज आर पॉसिबल। डीएससी इज टफ। Again, I like these kind of comments. So VS says 156 marks पे 1400 रैंक है। लास्ट ईयर 150 पे 400 रैंक था। इतना इन्फ्लेशन कैसे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अ गुड वन। ठीक है। यार, महंगाई हर जगह है। ठीक है, अब मार्क्स में भी थोड़ी इन्फ्लेशन अगर आ रही है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। और इलेक्शन का टाइम है, लेट्स नॉट कमेंट एनीथिंग एब्रप्टली। ठीक है। सो आई नो। और इसका आंसर अगर ऑन अ लाइटर नोट मुझे देना हो, तो ऑल ऑफ यू हैव, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ठीक है। इस इन्फ्लेशन का अगर आपको किसी पे जिम्मा डालना है, so it's all your colleagues, all your friends who are to be reasoned out for this particular thing. इतना सारा इन्फ्लेशन ये सिर्फ इस वजह से है, and of course the second reason is एनटीए और यूजीसी, जिन्होंने इतना प्यारा पेपर बना के आप सबको दिया। ठीक है। ये दो रीजंस हैं जिन पे आप अपना ये इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो डाल सकते हो बड़े आराम से। सूरज प्रताप says 200 EWS DSC JNU. आई गेस सूरज, ऑल आर पॉसिबल। डीएससी थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बाकी जेएनयू, आईजीडीआर एंड सो ऑन, ऑल आर पॉसिबल। बट आई लाइक द इन्फ्लेशन वाला कमेंट, गुड। That's how you should keep yourself positive. ठीक है, and just feel motivated, so it's good. यार, कोई अगर है 208 marks पे, तो please do share your percentile as well, right? Good.
जब रिजल्ट आना था तब हुआ था आपका ट्विटर का प्रमोशन, राइट? और आज हो रहा है एलपीयू का प्रमोशन। सॉलिड, गुड। ओके, ठीक है। तो हाँ, ओके, जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे हो तो आई डोंट नो हाउ मेनी वुड बी काइंड ऑफ सिटिंग फॉर एलपीयू के एडमिशन के, बट दे आर ऑल्सो ऑफरिंग यू स्कॉलरशिप, तो you might just try it, right? Just look at it once. Good, good. ठीक है, so these are the option, इन सब में तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, cool, cool. So I'll just rather stick to the calculator, and that is fine. Need not go too much into the other details of the course structure. Okay, wow. So सूरज प्रताप says जब उनके 200 मार्क्स हैं, he's sitting at 465 rank, dot 200, 465 रैंक। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो अपने आप बहुत इजीली कि 200 प्लस, 200 या 200 प्लस पे कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं अभी की डेट में। एंड आई बीन टेलिंग यू फ्रॉम डे वन, इवन दो काफी बच्चों को थोड़ा सा वो लगा होगा डिसहार्टनिंग कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाएगी, राइट? इन द वेरी फर्स्ट सेशन आई टोल्ड 235 प्लस इज द number I'm looking at, but that is the reality, because I know how many students, at least I know the ones who have scored 200 plus. Okay, there are 100 plus students, right? So now with every passing day, especially with such a metrics, you know कि हाँ, जब 200 मार्क्स मैं ला रहा हूँ तब भी अगर मेरी 465 rank है, then God knows how the ranks will be, uh, how the ranks will be, or how the cutoff, sorry, how the cutoffs would be designed, right? So great. So always try to keep the bar on a very higher side. Okay, try to achieve that point, and then definitely you'll get it. Okay. Raman says 215 pe, it is saying 262 rank. Aman has come up with a entire analysis and he's sharing that with us. Thank you, Aman. So he says, okay, correct. 215 पे 262 रैंक है। 200 पे था आपका 265, which सूरज shared. ठीक है। Okay, that's too much of to just let's go in a sequential manner. ठीक है, 200 पे 250, 240, 265, cool. फिर अगर हम जाते हैं 215 पे, it comes to 262, और उससे पहले 201 पे। ओके, लेट्स होल्ड ऑन। 200 पे 265 एंड 201, which is just one mark. Your rank is from 265 to 465 to 441, एक मार्क पे। अराउंड 20-25 का वेरिएशन है एक मार्क पे, 200 और 201। Thank you, Sayantika. The calculator is showing the same mark. Yes, all of you are confirming कि the matrix is not updating, so it's the same as it is. It doesn't matter. Cool. Okay, so another number that we can add to the analysis made by Aman. ठीक है. So पहले तो 200 से 201 पे जब आप जा रहे हो तो रैंक इज 465 से 441। ठीक है, मैं 200 के प्लस का ही सिनेरियो ले रहा हूं, सो आई वोंट गो इनटू 193 170 अभी के लिए। ठीक है, वहीं अब आप 201 से अगर आप 220 पे आते हो, 201 से 220 पे आते हो, देन द रैंक कम्स फ्रॉम 441 टू 205। ठीक है,
आप में से कोई चाहे तो इसको एक पेन पेपर पे लिख सकता है अपने खुद के कैलकुलेशन के लिए। ओके, कूल, सॉर्टेड। ठीक है। तो व्हाट आई कैन सी इज कि द मोमेंट आप 201 से 220, विच इज अप्रोक्सीमेटली 19 नंबर, 19-20 नंबर ले लेते हैं। अब नहीं नहीं, 20 नहीं लेते, 19 ही लेते हैं, बिकॉज हर एक नंबर पे रैंक इज चेंजिंग। लेट्स बी वेरी सीरियस, ठीक है। 19 मार्क्स पे योर रैंक इज मूविंग फ्रॉम 441 से 205। अराउंड 200 प्लस रैंकिंग का वेरिएशन आ रहा है। तो इतने लोग वहां पे ऑलरेडी बैठे हैं ऑन 19 नंबर्स, इन बिटवीन द 19 रेंज। हम्म। ओके। ठीक है। देन 234, ठीक है, 220 पे 205, और 234, 234 पे 110 रैंक। रैंक ऑलमोस्ट हाफ हो गई है व्हेन 14 मोर मार्क्स आर स्कोर्ड। ठीक है, 205 से 110 हो गया है, फ्रॉम 220 टू 234। ओके, लेट्स लीव दैट। उससे भी पहले 220 से अगर आप 7 मार्क्स और ऐड कर लो, विच इज 227, योर रैंकिंग कम्स डाउन फ्रॉम 205 टू 148। 50 का डिफरेंस आ जाता है, 50 रैंक्स का, राइट। आई एम लीविंग द इंटरप्रिटेशन, राइट। मतलब आप समझ सकते हो कि सिर्फ 7 मार्क्स पे 50 बच्चे और रैंक्स के बेसिस पे आप देख सकते हो, ओनली ऑन 7 मार्क्स। ओके, अब एक इससे एक आइडिया और मिल रहा है, लेट मी जस्ट रीअश्योर माई सेल्फ। 227 से 234, विच इज 7 मार्क्स अगेन। 220 से 227, 7 मार्क्स, 50 रैंक्स। 227 से 234, 227 से 234, अगेन 7 रैंक्स। एंड अगेन ऑलमोस्ट 50 का वेरिएशन, बट 40 का ले लेते हैं, फ्रॉम 148 टू 110। ठीक है, सॉर्टेड। सो 234 अगर मैं नंबर लूं तो देर आर अराउंड 100 प्लस स्टूडेंट्स। ओके। ओके। तो जो इंटरप्रिटेशन, एक रफ इंटरप्रिटेशन जो मेरे पास आ रहा है वो ये है कि जब आप 200 से चीजें शुरू कर रहे हो फ्रॉम 200, ठीक है, 200 टू 215 और 20, वहां पे वो जो बल्क है टिल 225, वहां पे बहुत सारा बच्चा है। ठीक है। अगर आप देखो, इनफैक्ट अराउंड 250, 215 पे, 200 से 215 पे देर अराउंड 250 स्टूडेंट्स। द मोमेंट आप एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हो, विच इज अराउंड
Yes, voices. Give me some time. We'll be back in another session. Okay. Oh, thank you. Thank you so much, guys.